इम्प्रॉम्प्टू प्लान। ऐसा ही बना हमारा गोवा का प्लान, स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी। एक सुबह उठकर कॉल आया कि गोवा चले, तो बस 4 दिन पहले टिकट बुक कर दिया, बैग्स पैक कर दिया और पहुंच गए गोवा। डे 1 तो ऑलमोस्ट ट्रैवल में ही निकल गया। ट्रेन ट्रैवल was long but with good views. Reached Goa, checked in and had a scenic beachside lunch. It's around 5:15 currently and हमने यहाँ पे waves में एक खाना खाया। Explored the city and the nightlife a bit. यहाँ पे ऐसे dresses मिल रहे हैं which are like very nice actually and they're quite cheap as well. Ate some good food and ended day 1 just to begin day 2 in Goa. Good morning, it's the next day, that is day 2 here in Goa. We are still staying at this property at Anjuna Beach and आज का प्लान ऐसा है कि हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे and then we'll go to a very famous and popular cafe called as Arjuna. इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है and it's such a nice aesthetic cafe which I am super excited to go, and this place basically is known for its breakfast and brunch. Most people don't suggest to have dinner or any heavy sort of things over there because उनका menu ऐसा है, and I'll obviously show you guys, so come along as we go. गोवा पे सबको जैसा लेट स्टार्ट होता है, वी वरंट रशिंग एट ऑल, टेकिंग अवर टाइम, एन्जॉइंग द मोमेंट, एंड हमारा जो प्लेस है ना यहाँ से यू कैन हियर द वेव्स क्रैशिंग विच इज़ लाइक सो थेरेप्यूटिक ऑल्सो। तो हम एन्जॉय कर करके वी वर ईटिंग आवर ब्रेकफास्ट एंड नाउ वी हेडिंग टू अर्जुना विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। एंड ये हमारे प्लेस से ना काफ़ी पास है, इतना भी दूर नहीं है, इट्स लाइक 10 minutes समथिंग इन द कार। तो हमारे पास जीप तो है ही, तो उसमें हम जाएंगे अर्जुना नाउ। Like a huge variety of all these artifacts over here, from clothing, jewelry to even handicrafts and decorative things that you can get it for your home as well. So this is a very pretty shop here inside Arjuna, and there's so many variety of products and things that are here to buy, and so beautiful and very nicely made products as well. कैफ़े बहुत ही वाइबी प्लेस है। द फूड वॉज अमेजिंग एंड ऑल्सो क्वाइट रीजनेबल। यू हैव लाइक फ्री वाईफाई एक्सेस ऑल्सो, सो यू कैन वर्क फ्रॉम योर ऑल्सो, एंड द एम्बियंस ऑफ द प्लेस इज़ रियली नाइस। थोड़ा गर्म होता है, दैट इज़ द ओनली कंसर्न, बट अदर देन दैट great food, great ambience, and a place that you must visit here. Currently, I am at this place called as Parra, which is very famous for its coconut tree lane. यहाँ पे बहुत सारे शूटिंग भी हुए हैं ऑफ मलंग डियर जिंदगी, एंड अभी मैं एक्साइटेड हूँ टू ड्राइव था दैट द कार वी हैव रेंटेड, एंड आई एम गोना ड्राइव। अब तो मेरे फ्रेंड्स ड्राइव कर रहे थे, अभी आई एम गोना ड्राइव। द रोड इज़ लाइक रियली नाइस, पूरे आजू बाजू कोकोनट ट्री है, एक पतला सा रोड है बट इट्स सच अ नाइस रोड, एंड एक प्री वेडिंग शूट भी हो रहा है। सो ऐसे बहुत सारे शूटिंग भी यहाँ पे होते हैं सिंस इट्स अ वेरी फेमस पॉपुलर शूट लोकेशन।
was a great experience. मैंने इतना बड़ा गाड़ी कभी चलाया नहीं है, and it's very powerful also. Slow चलाया, but it was such a fun experience, and the road and the views are just awesome, making the experience even better. तो अभी हम जा रहे हैं next location पे. Anyways, my friends are leaving me. So currently I am at the Kalangut Road here in Goa. This is the main market area road. यहाँ पे बहुत सारे shops है. अभी currently बज रहे हैं 4:30. तो इतने shops open नहीं है. And evening time में this area is very lively. And you can do shopping of like Goa के famous garments, kaju. You have liquor shops and all those things, toys, dresses, all the things that are you can shop over here. So I wanted to stop here and show you guys the place and have a look. ये यहाँ में बहुत सालों से भी है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स है. देर आर डेकोरेटिव आइटम्स, देर आर बैग्स, ज्वेलरी एंड ऑल दोज आइटम्स विच आर सो प्रिटी. दिस इज हाउ मच? ये 1500 रुपये. 1500. ऐसा स्क्रू खोलने का और इस खोलने के बाद हाथ दिखाइए, ऐसे डाल के इसको स्क्रू करने का. So I got to know that this market over here is since 20 years. So I remember हमेशा आती थी तो I used to see this market and first time I'm here. And it's a large market, you know. पूरा lane है filled with all the things, very pretty things. And they are a bit pricey, I won't lie. But they are collectible things which are like so pretty and nice. राइट नाउ और हम आए हैं यहाँ पे अग्वाड़ा फोर्ट में. दिस फोर्ट इज़ लोकेटेड एट अ हाइट एज वेल एंड ऊपर से द व्यू ऑफ द सनसेट वुड बी अमेजिंग. सो हम वहाँ पे जा रहे हैं अभी एंड थोड़ा सा चल के जाना है. एंड द टिकट टू द प्लेस इज़ ₹25 per person and you can go and enjoy the sunset, view the fort as well. It's quite a large fort. हम अक्सर हमारी लाइफ में किसी न किसी चीज़ के पीछे दौड़ते रहते हैं, पर कभी कभी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी इन छोटे छोटे पलों से मिलती है. कुछ पल ठहर के तो देखो और जानो हमारी ये दुनिया कितनी खूबसूरत है. बस देखने का नज़रिया होना चाहिए और मन में उसे जानने की इच्छा. बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे where you can take good photos. Look at how beautiful this place is and sun भी सेट हो रहा है and sun ना सी के वहाँ पे सेट हो रहा है. वहाँ can see the Aguada beach as well and उसके ऊपर का sunset is very pretty. So this was the Aguada fort and यहाँ पे बहुत सारे places है where you can know the history of the place and also learn more about this place. बहुत सारे boards लगाए हुए हैं. एंड अभी हम वी आर एग्जिटिंग द फोर्ट एंड गोइंग बैक टू अवर रूम अगेन बिकॉज अभी टाइम हो चुका है. दिस फोर्ट क्लोजेज एट 6 तो अभी ऑलमोस्ट 6 तो 6:30 हो गया है. द सन इज ऑल्सो सेटिंग एंड या वी आर गोइंग बैक टू अवर रूम. दिस इज द प्रॉन रवा मसाला. Okay, so this is the mackerel reshado, which is supposed to be Goa's very popular fish dish. अलग ही टेस्ट है. तो आगे देखो. So this is squid golden fry. इसके साथ ये लोगों ने मेयोनीज का सॉस भी दिया है. So this squid was really nice and very flavorful and ऐसा कड़क से खाने को मज़ा आता है. This was a Vinayak restaurant. The food is quite nice and priced very reasonably. So you must come here if you are near Anjuna area. This area is rather very quiet as compared to other areas in Goa. Live music वगैरह तो कुछ है नहीं. But then too, if you want to have your dinner nicely and quietly, and if you are with family, then I would recommend coming to this place, and you will have a delicious meal as well. This is how we ended our this day here in Goa. And फिलहाल कल का and परसों का दिन is बाकी. So I'll take you on to the journey as we move along. So good night, and I'll see you tomorrow.
Currently we are at the Kalangut market area to do some shopping because since आज हमारा last day है, we thought to explore the market and buy something at this time. सब जगह same ही रहता है to be honest, but then the fun of shopping in different beaches is different. Everyone is staring at me, so let's go and shop something. For its kajus and बहुत सारे dry fruits, so we bought some kaju from this store and variety is awesome, like there's salted, roasted, chili, pepper, all those variety. मैंने बस salted वाला खरीदा है, just basic. I randomly came into the shop and यहाँ पे you can buy all these magnets, knick-knacks, jewelry, all those things and बहुत ही अच्छे items है to give as a souvenir for yourself, for someone else as well. So I have currently bought just this dabba. This is for 100 and I'm looking for a magnet. So currently I am at a place called as Souza Logo, which is at Kalangut beach in Goa, and this is exactly in front of the beach. बीच में फ़िलहाल तो गर्मी है, but the cool breeze is really soothing and the sound of the wave also. 2:30 हुआ है दोपहर का time, but we are here to have our lunch और मेरे को specifically bibinka खाना है, which is a Goan speciality dessert. I have read about it but never had it. So finally यहाँ पे we got to know that bibinka with ice cream is available. So let's see how that tastes. This is the squid chili fry. This is nice. And they serve you with this french fry. Goa में आके first time we are eating crab at this place. And it's well cooked as well. So I'm enjoying the crab with the view of the ocean now. So this is the caramel custard. It is filled with caramel on top. अच्छा? मैं वो नहीं अच्छा लगा. This was okay, हाँ. मतलब the caramel is too caramelized. Egg yolk मैदा, okay. हाँ. Coconut milk. This is a Goan speciality, right? Thank you. I like it. With ice cream, it's nice. Just had our lunch at the place. The food was really nice, but the ambience and the view was amazing, and that was the star of our lunch over here. And अभी फ़िलहाल ये है Kalangut beach, but it's very hot currently, and I don't think I want to go into the water. I am scared of the water, so I don't know I want to go. But this is the beach. I just wanted to give you a quick view of the beach. Morjim beach here in Goa, which is considered one of the most quietest and nicest beach in Goa because ज़्यादा public यहाँ पे नहीं आती है. It's quite far from where we are staying. थोड़ा सा रास्ता भी we were lost for some time, but we eventually found the रास्ता and now we're at the beach. So we'll go to one of the shacks and chill for some time over there. Currently we are at the Morjim beach and यहाँ पे हम लोग sitting on one of the shacks over here called Tomatoes. हम यहाँ पे if you remember the last clips वहाँ पे हम लोग last time भी Tomato में थे and that was also beach को लग के but was not beach facing. This is literally like a shack जो beach के उधर ही है and this is very peaceful as compared to the other beaches of Vaga, Kalangut and Anjuna as well. This is very shant, very nice and also very clean and very less number of people. So if you want like a very chill environment, this is the place that you have to come.
सनसेट से हमारा ये दिन गोवा में एंड हुआ और सुबह अर्ली मॉर्निंग की रिटर्न ट्रेन बोर्ड करके हम अपने साथ नई यादें और नई उम्मीद लेकर घर की तरफ बढ़े। And this is the first time I'm gonna try it over here. हर ट्रैवल और हर डेस्टिनेशन हमें कुछ न कुछ सिखाता ज़रूर है, This market over here is since 20 years. जैसे कि हर बार प्लान होना ज़रूरी नहीं है। We weren't rushing at all, taking our time, enjoying the moment. कभी कभी जिंदगी को अपना रास्ता दिखाने का मौका ज़रूर देना। Today एक बहुत special thing हुआ. We hit 5,000 subscribers. You never know, you may be amused where life takes you. मंजिल भले ही पता न हो, पर पूरा मज़ा तो उस सफ़र का ही तो है।